Very good evening to all of you. So today we are going to begin with a new concept, that is Laburnum Talks Class 11. Okay. Again, it's a very beautiful and touching poem. Till now, we have done so many of emotional poems, and where humanity is being concerned, love of parents is being concerned. So again, in this poem, there are two or three main important uh, concepts that are being explored. The first one is, as I have written, nature poem. Okay, nature and its role, how it's nature and its role, okay, in our lives. Basically, the poet wants to say a lot, to the nature. He nature की image को लेकर basically एक तरीके से he wants to say few things about life. कि हमारी human life किस तरीके से we should progress while living in our lives. Human life is not at all still. It just keeps on moving. So nature is the protector. Nature is playing the role of protector. As laburnum top, the laburnum tree is the protector here. So the role played by nature is of a protector. Okay, कि वो protection कर रहा है उसकी bird की. There's a bird goldfinch and its family that is living. तो वो उसका protection कर रहा है. Fine. So that is the thing. Secondly, it is telling a lot, about life and its important elements. Life, अगर हम as a journey देखें तो life is never still. So the poem is teaching that life keeps on moving. It has to. It cannot stop. And if there are moments of happiness, then moments of sadness will definitely come. That is a reality. So we all have to prepare for it. कि अगर कुछ happiness हमारी life में आती है तो sadness भी definitely life में आएगा. That is the thing. Then secondly, where this cycle is being repeated. Happiness, sadness. This is a cyclic process जो चलता रहेगा. So the main point is कि we should not be scared of it. मतलब स्केयर होके या उसको fearful होके we should not sit still कि अब क्या होगा. That means that we should not live in life of inactivity. Inertia नहीं होना चाहिए life में. No inactivity. क्योंकि life का मतलब ही है it keeps on moving, it is never still. So there should be no inertia or inactivity. So basically the poem tells about pattern of life, how a tree symbolized by nature protects life. नेचर लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट करता है, कैसे नर्चर करता है, जो पोम है वो उसी के बारे में. राइट. देन इट्स अ नेचर पोएम एज वी हैव सीन. तो लैबर्नम टॉप का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है उसमें. लैबर्नम ट्री एक तरीके का ट्री होता है विद येलो फ्लावर्स एंड the entire the poem and its circumstances are being woven around this tree. इस ट्री के अराउंड सब कुछ woven है. that is why टाइटल है जो पोम का वो ट्री के नाम पर ही है, लैबर्नम टॉप. एंड इमेजरी, तो जो इमेजरी से ही ये सारी जो लाइफ की हमने अभी बातें की हैं वो डिस्कस की हैं, वो सब इसी इमेजरी के थ्रू निकल कर आएंगे. फाइन. So we will have a reading also of the poem, and these are some certain important lines about the poem, and this is by about the poet. So he is the poet Ted Hughes. He was an English poet, translator, and children's writer. He is often called the best poet of the 20th century. So he is a very famous poet, okay, and he has written a lot about topics related to children that children will love. So ये जो nature poetry है, you can say that laburnum top, as the name signifies, is a nature poetry. तो nature poetry है, and it is telling you about the reality of life, what life is. Life is all about ups and downs. जब आपको आंसर में लिखना होगा, then you can write like this, that the poem Laburnum Top teaches you about life and its elements, that life is all about ups and downs. Okay,
वन पीरियड ऑफ हैप्पीनेस वुड बी फॉलोड बाय सैड। मतलब किसी की लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं स्टिल रहे, इट हैज टू बी लाइक दिस। ओके, सो दैट इज व्हाट इट इज बीन शोइंग। ऐसा ही ट्री के साथ हुआ था कि जब जो बर्ड है, गोल्डफिंच जो बर्ड है, जब गोल्डफिंच जो बर्ड है, जब वो ट्री पर आकर बैठता है और अपना जो नेस्ट वो बना के रखता है, फिर वो अपने बेबीज को फीड करता है, तो ट्री इज फुल ऑफ लाइफ। लेकिन जब जैसे ही वो उस ट्री से उड़कर एंड ही मूव्स टू अनदर प्लेस एंड ही मूव्स द ट्री, द बर्ड मूव्स टू द स्काई, द ट्री बिकम्स द सेम। तो बेसिकली दिस इज अ पैटर्न, ये एक पैटर्न है, हैप्पीनेस सैडनेस, मोमेंट्स ऑफ जॉय, देन मोमेंट्स ऑफ सीरियसनेस। तो वापस इतनी वैसा होता था, ठीक है, जैसा वो इनिशियली था। तो यही द पोएट वांट्स टू गिव दिस मैसेज कि दिस विल गो ऑन, बट बीइंग एज humans and being as mature people, it is our duty that we should not be defeated by it। कि अगर सैडनेस आई है तो हम बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं उस चीज को, एंड वी हैव बिकम स्टिल, वी आर नॉट एक्टिंग एनीथिंग, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू मेक आवर लाइफ बेटर। या फिर हैप्पीनेस है तो हम बहुत ही ज्यादा उसमें इनग्रॉस हो गए, बहुत ही ज्यादा खुश हो गए हैं, तब भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं कि हाँ एवरीथिंग विल हैपन, ये तो हो ही जाएगा एंड दिस। नो, poet wants to tell us कि life is there to live and then you have to do your part। आप आपका जो पार्ट है, आपका जो वर्क है, you have to provide your share। okay, you cannot sit still and be inactive, rather you have to provide your part। So he was given this the title of poet laureate also, and he was again married to one of the finest writers the time, Sylvia Plath, who was another renowned writer at the time। So this was about 10 years, and now there are few lines जिनको पढ़ के हमें और पिक्चर क्लियर हो जाएगी अबाउट द पोम। इसकी थीम्स क्या हैं, पोम का कंटेंट क्या है, और पोम के थ्रू जो पोएट है व्हाट मैसेज ही वांट्स टू गिव। The Laburnum top is a poem, so you can get a question also on this, that give the significance of the title Laburnum top। Then you have to write that entire action takes place here only, that's why the poem is titled as Laburnum top। जो पोम का एंटायर एक्शन है, बर्ड का आना एंड गिविंग फीड टू द चिल्ड्रन, देन गोइंग बैक अगेन, दैट हैपेंस एट द laburnum top, the upper part of the tree। Laburnum is a tree with yellow leaves and yellow flowers। It is a poem to be relished with active imagery। तो एक जो पोम में इम्पोर्टेंट है, दैट इज इमेजरी, जो हम डिस्कस किया, ठीक है। जो इमेजेस हैं ड्रॉ अप की गई हैं, नेचर इमेजरी, यू कैन से इमेजरी ऑफ नेचर, उसके थ्रू द पोएट हैज डिपिक्टेड so many things। The name itself presents a picture of hanging yellow flowers that relaxes our mind and takes us to the world of nature's beauty। The poet talks about an afternoon in autumn। तो वो ड्राई सीजन है, ठीक है, जब लीव्स झड़ जाती हैं, पतझड़ इसको कहते हैं, तो वो वाला सीजन है जिसमें बैकग्राउंड सेटअप है हमारा पोम का। एंड द लैबर्नम ट्री इज स्टैंडिंग स्टिल। तो वो ट्री बिल्कुल ऐसा लग रहा है दैट इट इज स्टिल, देयर इज नो मूवमेंट, एक भी लीफ नहीं हिल रही है, एक भी फ्लावर नहीं मूव कर रहा है, तो इट इज जस्ट स्टिल एंड साइलेंट। There are no particular movements in its branches, flowers or leaves। The afternoon sun shines upon the tree। The yellow sunlight seems to intensify the aura of the yellow laburnum tree। Again जो एक important question हो सकता है, significance of the color yellow। Color yellow बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ है पोम में, कि एक तो जो laburnum tree है उसकी leaves yellow हैं। Goldfinch the bird which comes and perches over the tree, that is also of yellow color। Yellow flowers, so the yellow color is being mentioned in the poem twice or thrice, so it holds significance, along with the bountiful growth of yellow flowers on the tree। The leaves are also yellow since it's autumn। All the seeds have fallen down। तो जो leaves है वो भी yellow हो गई हैं due to autumn। वो एक जब झड़ते ही हैं लीव्स, और जो पतझड़ का मौसम होता है उसमें जनरली क्या होता है, ग्रीन से जो लीव्स का कलर है वो चेंज हो जाता है, इट बिकम्स येलो। So that's the same thing has happened with the tree also, and all the seeds have fallen down। जितनी भी ट्री की सीड्स वो सीड्स हैं वो सब गिर गए। तो एकदम साइलेंट और एकदम सॉम्बर एटमॉस्फेयर है।
it's more or like you can say a feeling of death sort of feeling. ठीक है, somber and serious atmosphere as signified by the tree. क्योंकि ऑटम सीजन है तो जो एनर्जी है, जो वाइटैलिटी है, जनरली जो ट्रीज के साथ, नेचर के साथ एसोसिएट करते हैं, वो इस वेदर में नहीं होती. तो दैट इज व्हाई द एटमॉस्फेयर इज कंप्लीटली somber एंड सीरियस. Then what happens? This silence is interrupted by the arrival of the goldfinch. So it's a beautiful small yellow bird, that has placed its nest. जो अपना घोंसला है वो laburnum top पे the bird has made. तो the bird has come and जैसे ही वो bird आती है ट्री पर, तो एकदम से जो ट्री है it becomes again full of energy. तो जो ये प्रोसेस है ये अगेन पैरेलल चल रहा है लाइफ की सीक्वेंस के साथ. कि जैसे इनिशियली लाइफ इज स्टिल ओके एंड साइलेंट, कि कोई मूवमेंट नहीं है हमारी लाइफ में और बस चल रही है, इट्स जस्ट गोइंग ऑन. देन समथिंग एक्साइटिंग हैपेंस. तो वो लाइफ का क्या होता है, इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस, इट बिकम्स लाइक दिस, इट बिकम्स लाइक दिस. ओके, एक वो जर्नी हमारी इस तरीके से हो जाती है. दिस शोज कि इट इज गोइंग स्ट्रेट with no energy, no vitality, and when there is something exciting happens, then the movement becomes like this. So the same thing is happening with the tree. First two lines में जो poem की lines में क्या show डिपिक्ट होता है कि जो tree है that is very silent and still. The atmosphere has a mix of death-like atmosphere and it is very quiet, extremely quiet. But as soon as the bird enters and it goes towards the tree and sits there, the entire tree, revives with life. We can say that the entire tree, जो tree की जो पूरी persona थी, that revives on with life and energy. तो सेम थिंग हैपन्स विद अस कि अगर हमारी लाइफ में अचानक से कुछ अच्छा हो जाता है तो क्या होता है कि लाइफ एकदम से बहुत अच्छी लगने लग जाती है, बहुत ब्यूटीफुल लगने लग जाती है. फॉर एग्जाम्पल हमारी कुछ बहुत पुरानी विश है, या वी हैव गॉट वेरी गुड मार्क्स, या और भी कुछ ऐसा है हमारा ड्रीम जो पूरा हो गया, तो सडनली लाइफ बिकम्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, दैट एज इफ वी आर द मोस्ट हैप्पी पर्सन ऑन द अर्थ. So the same thing is happening with the tree. The earlier quiet tree, now it has, being flooded with activity. And one end of a branch seems to come alive with brisk movements. Now, the goldfinch is also compared to goldfinch की movements है, क्योंकि birds की movements क्या होती हैं, बहुत swift होती हैं, बहुत fast होती हैं, right? फटाफट एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जाना, और मतलब इतनी जल्दी कि आप कई बार देख भी नहीं पाते और आप पकड़ना तो दूर की बात है. तो सेम थिंग हैपेंस हियर, और it is happening within few seconds, so it is feeling very fast, very brisk. The goldfinch with a lizard-like swift movements. So the poet has compared the goldfinch with a lizard. So this is an example of what we can similify. So the both of them are compared. Why? Because of their briskness. Briskness means swift, fast. So why it is? You can be asked a question that why it is being compared with lizard. You have to say because of their swiftness. कौन सी क्वालिटी कंपेयर की गई है इनकी? स्विफ्टनेस. जैसे एक लिजर्ड फास्टली मूव करती है, उसी तरीके से यहाँ गोल्डफिंच भी फास्टली मूव ऑन कर रही है फ्रॉम वन ब्रांच टू एनिमल. एंड हर मूवमेंट्स आर वेरी अलर्ट एंड एब्रप्ट, एंड शी बहुत ही डिसाइडेड उसकी मूवमेंट्स हैं. शी नोज शी और टू विच ब्रांच शी हैज टू गो, सो डायरेक्टली शी गोज देयर. Her entry into the branch and livens up her birdlings in the nest. So what happens? The small seedlings, so small birdlings are there in the nest, and she is a mother. The goldfinch is a mother, and she has small, little goldfinch waiting for her in the nest. So she has gone to bring the food for them. So as soon as she entered her nest, the nest erupts with activity, with happiness, with joy, because all her children are very happy seeing her. So they are chittering, and they are shrieking with joy because now they will get their mother and the food.
The whole laburnum tree trembles with this series of events. And laburnum tree is all, the poet says it seems कि जो laburnum tree है वो भी enjoy कर रहा है पूरे process को. It is enjoying. The chittering birdlings and the vibrant laburnum tree are the engine of a family. तो एक और poetic device यहाँ पर use हुआ है when the it is being compared to the birdlings are compared to the engine. The poet uses the word Stokes to refer to the goldfinch's merry encounter with a family that brings the silent laburnum tree to life as well. This year we will be going to discuss in the lines what is Stoke and what is engine being referred to. So now what happens? Now after feeding her kids, the bird moves on to another branch and then finally she flies in the sky. So as soon as she flew in the sky, what happens? The laburnum tree again, becomes still. The laburnum tree again becomes still. So this shows that the life is again, full of ups and downs and unexpected happenings. हमेशा एक जैसा एटमॉस्फेयर और एक जैसी लाइफ नहीं रहती, एक जैसा पीरियड नहीं रहता है. That is what it is trying to show. As soon as laburnum tree, is feeling happy, is feeling vibrant, वो बिल्कुल एनर्जी और उसके साथ वाइब्रेंट हो गया है, तो कुछ टाइम वो रहता है. उसके बाद जैसे ही वो बर्ड फ्लू करती है स्काई की तरफ और दूसरी तरफ, तो वो बर्ड वापस से अपने पहले वाली पोजीशन पे आ जाता है. इट बिकम्स स्टिल, somber and white. So this ends the poem. So these are all, this again is discussing what kind of sounds, merry sounds the bird and her kids are being making up. And then after doing whistling and chirruping, that is the sound of the bird flies away. Fine. So in the end of the poem is what? The laburnum tree. Again, laburnum tree center of attention है, and now it has again become quiet, completely quiet, and जो initial उसका stage था वो वापस उस stage पर आ गया है. तो क्या stages हमने देखी? सबसे पहली stage हमने ये देखी कि एकदम quietness और stillness है, fine. उसके बाद थोड़ा सा एक्शन है, एक्शन के साथ जॉय है, हैप्पीनेस है, एंड एक्शन मूवमेंट है, एंड देन फाइनली अगेन थर्ड फेज में व्हाट डू वी सी दैट द अगेन जो फर्स्ट वाला फेज था वो रिपीट हुआ है. दैट इज द ट्री हैज अगेन बिकम क्वाइट एंड स्टिल. सो दिस वाज द समरी ऑफ द पोम. द laburnums top in the poem provides us with an insight into the role of nature. तो ये एक आपकी पहली थीम है, ठीक है, द रोल ऑफ नेचर in our lives, in building our lives. Role of nature and imagery or in building our lives. The laburnum tree represents the strength and the resourcefulness that nature provides to our lives. तो laburnum tree जो था वो बेसिकली प्रोटेक्टर बना, ठीक है, गोल्डफिंच और उसकी फैमिली के लिए. और लैबर्नम ट्री नेचर को सिग्निफाई करता है. तो दैट मीन्स नेचर इज अ प्रोटेक्टर ऑफ आवर लाइफ्स. नेचर हमें नॉरिश करता है, विच इज ट्रू. नेचर हमें नर्चर करता है. तो ये सारे रोल जो हैं ये नेचर प्ले करता है. नर्चरर, नॉरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन. तो जिस तरीके से लैबर्नम ट्री ने गोल्डफिंच की फैमिली को नर्चर किया, नॉरिश किया, प्रोटेक्ट किया, उसी तरीके से नेचर does the same with us. So that is another thing. Okay, that means that nature is the protector. That it plays the role of protector. रक्षक हम जिसको कहते हैं, हमारी लाइफ में नेचर का वो रोल रहता है. The momentary buzzing activity of the goldfinch family is quite contrasted with the cycle of life and time. तो जैसा कि हमने ये इनिशियली डिस्कस किया कि ये जो एक्टिविटी है, ये जो बजिंगनेस है, ये एनर्जी है, ये कॉन्ट्रास्ट हुई है किससे? स्टिलनेस से और साइलेंस से, जो लैबर्नम ट्री अभी फेस कर रहा है. तो जनरली यही होता है, ठीक है, लाइफ और टाइम में जनरली यही होता है कि लाइफ वैसे आपकी एक ही पैटर्न पे चलती रहती है. इट गोज ऑन स्मूथ एंड स्टिल एंड साइलेंट. बट बीच बीच में वो जैसे हम कहते हैं ना कि
स्पीड ब्रेकर इन टर्म्स ऑफ दिस लैंग्वेज, रोड लैंग्वेज। तो जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, दे कुड बी योर हैप्पी मोमेंट्स ऑल्सो एंड दे कुड बी योर सैड मोमेंट्स ऑल्सो। तो वो स्पीड ब्रेकर्स आते हैं और वो फिर एक अलग डायरेक्शन दे देते हैं लाइफ को। एंड देन जो आपका लाइफ का जो पाथ है वो थोड़ा सा अगेन अप एंड डाउन हो जाता है इंस्टेड ऑफ गोइंग लाइक दिस स्ट्रेट। तो दैट इज व्हाट इट इज बीइंग कॉन्ट्रास्टेड। दिस इज अनदर थीम। फाइन, we might face struggles in life but that does not mean time is going to stop। तो ये हमने डिस्कस किया कि कैसा भी मोमेंट आए लाइफ में, हैप्पीनेस, सैडनेस, एनी काइंड ऑफ मोमेंट, लेकिन वी हैव टू गो ऑन एंड ऑन। हम वेट नहीं कर सकते कि इससे अच्छा आएगा या फिर और खराब हो जाएगा। नो, वी हैव टू डू समथिंग। ये जरूरी नहीं है कि वी आर डूइंग समथिंग एंड इट वुड change the situation for better, लेकिन then even then as humans we cannot sit quietly, we have to do something। Life goes on strong and quietly without a fuss, like the laburnum tree standing steadfast in its original state of peace and quiet। तो जो ट्री है वो अगेन प्रोटेक्टर का रोल प्ले कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहा है, जो गोल्डफिंच और उसकी फैमिली को प्रॉपर प्रोटेक्शन देता है, उन्हें नर्चर करता है। कुछ मोमेंट के लिए वो हैप्पीनेस आई एंड देन इट अगेन गोस, बट द ट्री, इट इज सिंबलाइजिंग लाइफ, इट इज सिंबलाइजिंग नेचर, इट इज देयर फॉर एवर। वो हमेशा रहेगा। तो ये जो लाइफ और टाइम का कॉन्सेप्ट है, इट वुड रिमेन फॉर एवर। ओके, सो हियर वी एंड एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी वुड have a look at what the poem is all about and then discuss accordingly। So I hope you have understood it। If you have understood it properly, do like, share and subscribe the channel। So we are going to meet again in the